हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन एंड आप सभी का फिर से स्वागत है एशियन सेशन में। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एनएक्सजी मार्केट यूट्यूब चैनल पे। एनएक्सजी मार्केट के यूट्यूब चैनल पे मैंने कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया है। जनरली मैं मोबाइल में कमेंट सेक्शन ओपन करके रखता हूँ, तो कभी कभी क्या वॉइस इको हो जाती है, सो नॉट एन इशू। सो मोबाइल में मैं कमेंट देखता रहता हूँ और देन फिर उसका लैपटॉप पे रिप्लाई करता हूँ। सो जनरली आई डू दिस, तो ये कन्वीनियंट रहता है थोड़ा। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन वंस अगेन। आप सभी का एशियन सेशन में फिर से एक बार स्वागत है हमारे एनएक्सजी मार्केट के यूट्यूब चैनल पर। This session will be mixed in both Hindi and English. If you have any problem in language, again and again I keep repeating this thing. If you have any problem in language, please let me know. If you have problem in English and you want to understand in Hindi, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप हिंदी में समझना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर इसको थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए, right? If you have a problem in Hindi and you want to discuss something in English, then you can communicate with me and you can comment that sir please speak and please discuss this in English. So accordingly I will keep communicate and I will keep discussing things. I will keep discussing pairs and analysis, right? So let everyone join, then we will start in couple of minutes. सबसे पहले ये गोल्ड का चार्ट है। कल गोल्ड ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया और गोल्ड बिल्कुल वैसा ही चल रहा है टचवुड जैसा अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल लॉन्ग थे, कल नाजिया जी का भी मेरे पास मैसेज आया था, नाजिया तबस्सुम मैसेज मी दैट आई एम लॉन्ग इन गोल्ड। आई सेड कीप होल्ड योर लॉन्ग। रजत सर का भी मैसेज आया था मुझे, उन्होंने भी बोला सर मैं गोल्ड लॉन्ग में हूँ। मैंने बोला रखे रहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला था, या तो अपर बाउंड्री पे स्क्वायर ऑफ करना या लोअर बाउंड्री पे। लोअर बाउंड्री पे आ जाए तो बाय करना विद स्मॉल स्टॉप लॉस, और अगर ऊपर चला जाए तो शॉर्ट करना विद स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा लॉन्ग में पैसा बनाया होगा। आई होप आपने यहाँ स्क्वायर ऑफ कर दिया होगा, और इवन अगर आपने यहाँ शॉर्ट भी किया होगा विद स्मॉल स्टॉप लॉस, देन नो नीड टू वरी, ठीक है। स्मॉल स्टॉप लॉस इज नेवर द प्रॉब्लम, ठीक है। आप समझिए। नाउ इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर गोल्ड टू लॉन्ग हेयर, ठीक है, विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 4248, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4248 यू कैन लॉन्ग गोल्ड एट 4260 4265 लेवल नोट डाउन कर लें। यू कैन गो लॉन्ग इन गोल्ड अराउंड 4260 4265 जोन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4248, राइट, एंड विद द टारगेट ऑफ, पीछे देखना पड़ेगा उसके लिए, आई नीड टू लुक बैक फॉर द टारगेट। I need to look left यहां पे। So let's discuss the target again. This would be your target zone. This would be your target zone. Fine, 4300 to 4320, and at the same time this would be your final target 4380 44, okay, right? So look at the risk to reward ratio. If you are longing at 4265 and 4260, then the stop loss is hardly 120 pips or 150 pips. But your target, look at your target. Your target would be 400 pips, 350 pips, 450 pips, like this. So I always believe in risk to reward ratio. This is how I work. Stop loss is always handy. Sometimes
I generally don't use stop loss because I had a very small position sizing, very small position sizing, like in micro lots. So I don't use stop loss. Whenever I have a decent sizing, whenever I have a decent position sizing, then I always use stop loss. This is how I trade. If you don't want to put a stop loss, then have a very less position sizing. Like for example, you are having a $5,000 account, right? Then you use 0.01, 0.02. That's it. Then don't use a stop loss. If you are having a decent sizing, if you are having a decent position sizing, decent volume, then always have a stop loss. Always manage your risk. Have a proper entry, right? Have a proper entry with a small stop loss and big target. That is why how risk to reward ratio get managed automatically. Right? Now let's go to the Forex factory. Let's go to the calendar today. आज कैलेंडर देख लेते हैं एक बार अपन इकोनॉमिक कैलेंडर. आज है 12th ऑफ दिसंबर गाइस, 12th ऑफ दिसंबर एंड टुडे इज फ्राइडे, सो इट्स अ वीकेंड. वी आर अप्रोचिंग द वीकेंड. सो फ्राइडे के जो मूव रहते हैं जनरली डोंट बिलीव इन दिस मूव्स बिकॉज उनका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज आपका पार्टिसिपेशन लेस हो जाता है और पीपल अपने वीकेंड मोड में आ जाती है. ठीक है. सो फ्राइडे के मूव को उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए. सो सबसे पहला अपना जो है 12:30 बजे 12:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वी हैव ए जीडीपी ऑफ यूके. यूके का जीडीपी है. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. दिस इज ओनली द वन रेड फोल्डर सो फार. एंड इन इवनिंग at 1:15 PM we have a French final CPI, okay, in euro. Then we have the FOMC member speak. Then we have the FOMC member HAMAC, then CB leading index, and then we have FOMC member again, Goolsby, right? So there is no red folder, so I would consider this as a less significant event. Whenever there is no red folder, then I would consider this as a very less significant event, right? So we have only single one folder, which is UK GDP. So it would impact GBP USD and as well as the Euro USD. So I hope this is only one red folder. So today is kind of a chilled day. There is I'm not expecting a much volatility or much directional move today. At the same time, I have given the gold direction. Let's go to the silver now. Look at the silver. Silver going up. Silver going up. Breakout retest continuation. Breakout retest continuation. Look at the setup. Again, I am putting this like this. Fine. Breakout retest continuation. Breakout retest continuation. Breakout retest continuation. Breakout retest continuation. It will keep doing like this. Fine. So this is very simple setup in silver. Buy here with the target of this. Right? It breaks out, then buy here with the target of this. Continue. Buy somewhere around here with the target this. Buy somewhere around with the target of this. Buy somewhere around with the target of this. As simple as this. These in the red zone, these are the resistance zone. This was the resistance zone. Now it is working as a support. Again, it is working as a support now. Whenever price breaks the resistance zone, it works as a support zone now. Right? Because all sellers converts into the buyers. Because buyers absorbed all the supply. Buyers absorbs all the supply. That's why all sellers become the buyer. This is how it works. Right? Guys, if I feel the less participation, then I will wind up the quickly. Fine? Because I don't like one-way interaction. I like two-way interaction. So I don't feel there is enough participation, then I will wind up immediately. So I don't see any kind of a comment as of now. So I am thinking to wind up in couple of minutes. Right? So I have discussed the gold, I have discussed the silver. Let's discuss the dollar index and Euro USD, then we will wind up. So this is dollar index. I am opening the daily chart. मैं daily chart open कर रहा हूँ dollar index का. एंड मैंने फीबो रिट्रेसमेंट डाला हुआ है. लुक एट द फीबो रिट्रेसमेंट. एंड फीबो रिट्रेसमेंट जब मैंने लो से हाई पे डाला हुआ है तो आई एम सीइंग 50% फीबो रिट्रेसमेंट आपका ये है.
ये है अपना 50% रिट्रेसमेंट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 99.30, 99.20 और ये कैंडल का लो क्या है 98.13, तो ये कैंडल का लो इंटेक्ट रहेगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका डॉलर इंडेक्स 99.40, 99.50 तक आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ इन डॉलर इंडेक्स। ठीक है, लेट्स गो टू द यूरो यूएसडी वेरी क्विकली। सो दिस इज यूरो यूएसडी, आई एम ओपनिंग दिस एक्सो चार्ट। ये देखो यूरो यूएसडी में भी जब मैंने ऊपर से लेके नीचे तक रिट्रेसमेंट डाला, सो अप्रोक्सीमेटली 61.8 पे ये अटक रहा है एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू टच 1640, ये वाला जोन, दिस जोन। आई एम एक्सपेक्टिंग यूरो यूएसडी टू टच दिस जोन, bare minimum. ठीक है, so this is my analysis for euro USD right now. Again, if you want to short, you can short euro USD with a small stop loss. Fine. So I hope Mukesh ji is absent today, Rajat ji is absent today, Nazia ma'am is also not there, Tamil Kumar is also not there. So it seems they are busy somewhere, so not an issue, not a problem. So I have discussed dollar index, euro USD. Let's discuss USD JPY because a lot of people trade euro USD JPY in Asia session. Right, look at this is the perfect buying zone for USD JPY. Those who trade in USD JPY, they can buy right now. They can buy right now. It was the perfect buying opportunity. It is the perfect buying opportunity in USD JPY. So 155 was a perfect zone. This one, this was the perfect buying zone and USD JPY just touched. If you see USD JPY, अगर आपको लगता है कि एक बार फिर से नीचे आता है, definitely it's a buying opportunity and this is the upside target. Upside target immediately आपका एक तो ये रहेगा 157 का, then 158 का रहेगा. So this is the upside target for USD JPY. Let's discuss the AUD USD now. So this is AUD USD. AUD USD में मैं अगेन बार बार बता चुका हूँ, ये देखिए ऊपर गया रेजिस्टेंस, नीचे गया सपोर्ट, ऊपर गया रेजिस्टेंस, नीचे गया, इट गॉट स्टक इन दिस रेंज. Short at the resistance zone, buy at the support zone. Short at the resistance zone, buy at the support zone. Till then it resolved this range. Fine. So it is as simple as this. So if you have any question, if you have any doubt, if you want to ask something, please let me know. Otherwise we will wind up. So I have opening the 1 hour chart of AUD USD and this is the range 66.80 to 68 on the upside and 66.20 to 66.40 on the upper side, 66 to 66.20. So approximately you can consider this as a 80 to 100 pips range. Fine. So there is not much about the calendar in Friday. Today is it's a Friday, so there is not much news in Forex Factory today. Only one red folder I can see. Right. Let's discuss the GBP USD now and then we will wind up. GBP USD is also retracing from the same level. So downside I am expecting this zone. At least this zone. Fine. So if you are looking for the short opportunity, then 34, 34.20 is a very decent zone for GBP USD short, and downside rate is open for 31.50 to 32. This is my downside zone.
So thank you everyone. Thanks for your time. Now we will meet in London session. Manage your risk, reduce your position sizing, control your volume, control your volatility, manage your risk to reward ratio, and have a safe trading. Thank you everyone. Thanks for your time. Bye bye. Take care.